Hello everyone. So in this video, I will be talking about the full registration process for TCS NQT, and I already posted the hiring yesterday. Now the registrations are open. I will be showing you the registration process. But the important thing is, if you want this video to watch in English, because I will be making this video in Hindi, just go to the video like this. Okay, you need to click on settings. You will click on subtitles. You will click on Hindi auto generated. Then you will click on subtitles. Then you will click on auto translate, then you will click on English. Okay, this way when you will play the video, the subtitle will be coming in English. Okay, I am making this video in Hindi. Okay, but if you want the subtitles in English, this way you can get the subtitles in English. Okay, let's start. First of all, in this video I will be talking about the registration process of TCS NQT. So start करते हैं वीडियो को. देखो, there are total two to three things which I need to talk about. First of all, if you want to register for this, the primary thing is either you will be having your account or you will be not having your account. There can be two conditions. Okay, first of all, you need to check this. How you will check this? You will scroll down, you will click on apply now. There are total two things. Okay, first of all, try to log in here. There is an option for register now and login. You will click on login here, and you will either paste your email ID or reference ID, and you will enter the captcha. Then they will be asking you the OTP. Okay, if the OTP is coming, that means you already have your ID. If the OTP is not coming, that means you don't have your ID, and your the previous profile is wiped out from TCS. But the thing is, there can be issues with the OTP as well. So what you need to do is just try multiple times. It is not like you are just trying one time or two time, then you are thinking that maybe my data is wiped out. Nothing like that. You need to try multiple times because there is a huge load on TCS servers right now. Okay, so this can be an issue. Otherwise, if your data is wiped out or you are registering the first time, you can click on register now button. In this, you need to select your category. Please choose the category as IT. If you will choose BPS, it will create a lot of issues. You need to create your IT under you need to create your ID under this IT section. Then you will click on continue. Then it will ask you email ID. You can paste your email ID. Then the OTP will come, and you need to like paste the OTP like this. This kind of mails you will get. Okay. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, ऑल्सो एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब आप बेसिक चीजें भर लोगे ना, तो आपको यू विल बी गेटिंग अ message like this. If you are registering first time, hi Praful, your registration is now complete. Please log into your register account by using your CTDT ID and then click on apply to drive. The apply for drive option will be visible only to eligible candidates. You are expected to complete your TCS application form later. जो आपका TCS application form है वो आप बाद में भी जाके भर सकते हो, बट मेन चीज है कि भाई आप apply to drive तो कर ही देना, वो यहाँ पर आपका होने वाला है. ठीक है. नाउ द थिंग इज सी, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा. इफ यू आर रजिस्टरिंग फर्स्ट टाइम, देन यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस व्हिच आई टोल्ड यू. ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड यू विल सी द होम स्क्रीन लाइक दिस ऑन द पोर्टल. आई विल टॉक अबाउट इट, बट उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन. बात ये है, देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूं. अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहली बात तो इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती. मैं आपको पहले ही क्लियरली बता रहा हूँ, कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है. आपको बस अप्लाई करना है, भले ही आपका रेज्यूम कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा. कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं है, चाहे आप 24 बैच से हो, 25 बैच से हो, या फिर आप 26 बैच से हो. एंड इस बार फेजेस काफी ज्यादा होंगे बिकॉज एप्लीकेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा आने वाली है. द मेन थिंग इज, देखो, जब आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो एक चीज तो इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बट जो सेकंड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है कि भाई बाकी के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. जैसे सपोज आपने टीसीएस एनक्यूटी का फुल लेंथ टेस्ट दिया. सपोज एक फुल लेंथ टेस्ट है टीसीएस एनक्यूटी का, इसमें 60 क्वेश्चन है. अब भाई इस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया, मान लिया कि 200 बच्चों ने और अटेम्प्ट किया, आपकी रैंक आई 100. अब आप तो ये सोच रहे हो कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी 200 स्टूडेंट्स में से 100 रैंक है, तो आपको ये समझ में आएगा ना यार, बाकी स्टूडेंट्स मुझसे बेटर कर रहे हैं, मुझे कौन से एरिया में बेटर करना है, मेरी रैंक किस एरिया में नीचे आई है. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं हम लाइव टेस्ट कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स. और इसमें बहुत मजा आता है, और हम लोग ये चीज कंडक्ट कराते हैं. ये चीज बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे अपने मॉक टेस्ट में. ऑलरेडी जो प्रैक्टिस टेस्ट है, कोडिंग शीट्स है, वो चल रही है, और ये चीज स्टार्ट होगी कुछ दिनों में. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या भाई कोर्स को जो भी बच्चे परचेज कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्राइस मात्र 300 रुपीज है. सबसे पहले आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है. ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. इस ग्रुप को सबसे पहले आप जाके ज्वाइन कर लेना. जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे ग्रुप को, मैं आपको पहले ही बताता हूं, डेली टेस्ट हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी. ठीक है,
आप देख सकते हो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, एंड मोर देन 1500 क्वेश्चंस अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आप देख रहे हो ना, 8-8 घंटे के। ये प्रैक्टिस टेस्ट ऐसा नहीं है कि हमने कचड़े की तरह सामान भर दिया है, क्रिस्प सामान भरा है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, आप कोर्सेज अगर ले रहे हो, अब मैं तो कह दूं कि भैया इसमें 500 घंटे का कंटेंट है, अब बच्चा 500 घंटे पढ़ेगा कैसे? आपने तो कंफ्यूज कर दिया ना उसको। तो क्रिस्प कंटेंट बहुत जरूरी है, तो ये पूरा क्रिस्प कंटेंट है। तो ये 8-8 आवर्स के प्रैक्टिस टेस्ट है, 3 आप देख सकते हो, बहुत टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं। एंड अभी लाइव टेस्ट का जो कंपटीशन है वो चालू होगा। कोडिंग की जो शीट्स वगैरह है प्रैक्टिस के लिए टीसीएस स्टाइल की, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि पता है आपको, टीसीएस में अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत दिक्कत आती है। टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चंस ही प्राइम और डिजिटल में सिलेक्शन करवाते हैं, और वो चीज इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड डेली प्रैक्टिस चल रही है आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। आप खुद देख लो, 25, 26, 27 कितने सारे टेस्ट हमने प्रोवाइड कराए हैं। 26, 27, 17, 17, 17, 17, 17, ये सारे टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस के लिए अभी चल रहे हैं डेली। तो मैं ये चाहता हूं कि काफी बच्चे क्या करते हैं ना, कोर्स खरीदते हैं, लेकिन कोर्स पता है कब खरीदते हैं? बहुत लेट खरीदते हैं। तो तब इशू हो जाता है। क्योंकि देखो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे कोर्स खरीदेंगे, लेकिन जब लेट हो जाते हैं ना, तो बस एक प्रॉब्लम यही आ जाती है कि भाई टाइम कम रहता है और उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हो पाती। अभी अपने पास 22 डेज है, और अपन बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे 22 डेज को, जिससे अपनी प्रिपरेशन सही रहे। अभी अपने पास टाइम है, लेकिन फिर यही है कि 10 दिन बचते हैं, फिर तो लाइव टेस्ट होते हैं, मतलब वही कंपटीशन वाले टेस्ट होते हैं। फिर वो उतना प्रिपरेशन का टाइम रह नहीं जाता, फिर तो ये है कि फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो तो अभी एनरोल कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने बेसिक चीज पर, जो अपना था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये टीसीएस का पोर्टल है बेसिकली। जैसे ही आप इस पर लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा पोर्टल दिखेगा, ठीक। तो यू कैन सी दिस you can see this portal after the login. So when you will see the portal like this, the important thing is this apply for drive option can come. Now I will tackle some 2 to 3 doubts. The main important part. So when you will open this portal na, this apply to drive option should come. Okay. But suppose this option is not coming for you. What can be the issue? The main thing is you need to go on track my application, and in the track my application it should be candidate registration registered. Okay. If this kind of thing is not showing to you, that means your data, your previous data is not wiped out. If your previous data is not wiped out, you can see the status on track my application, then you will not see this apply for drive. Now what you need to do is, first of all I'm talking about this. So when you will go on TCS NQT page, there is a help ID given here. Okay, so for any assistance, please go to the TCS help desk team. This is the email ID. Just go to the team and ask them to delete your data. If they will delete your data, then you will see this apply to drive option. Okay, so on this ID you need to reach out to the TCS team, ask them to wipe out your data, and when your data will be wiped out, then you can see this apply to drive option. But if this option is showing to you, then it is completely fine because your data is already wiped out. Okay, so this will be the first thing. Second thing is application form. Application form you can complete later, but if you will fill right now, that is also fine. This apply to drive option is mandatory, it should come. What you need to do is select the skills. First of all you need to, and you can choose the skills according to you, like whatever the skills you want to choose. Okay, then there will be the test center one. You need to click here. You can see here there are ample amount of test centers which are given. Okay, so you can see here lot of like test centers they have provided, in which you can give the exam. Okay, for example, in MP there is Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Ujjain. Lot of like test centers they have provided, so you can choose the preference of the test centers. Then preferred job locations also you can choose. These things will decide your TCS status of batch, like in which slot you will be getting the test mail, because the test location matters. Also you will be based on your preference job selection, like your test date, recruitment, everything depends upon that. Okay, so these things is very important. So this apply to drive option again very important. Through this you can apply for TCS NQT 2026. Very simple, only these things you need to fill, and you can click on apply for recruitment drive. Okay, apart from this there is a application form. This application form you need to fill. So this application form even you can fill later. In this first section you need to fill your personal details. Then in the academic and work experience, uh, there will be
qualifications. So the qualification for degree you will be choosing here, like I have written here. In the graduation, you will be filling the other things like your details and all. Then 12th details you will be filling here like this. You can see here. Okay, the main thing is these things should not overlap. Okay, if there will be an overlapping, then it can create the issues. Then other qualification details like 10, 12th, and these things you need to fill according to your qualification. Any other qualification you will fill. Okay, work experience you will fill, and then declaration you need to fill and save and continue. Okay, so I already filled the whole form. Then you can see the other details, form preview and declaration. So after filling that, you can continue, and application form instruction, you can submit the application form. So these things are basic things. I think these things you can submit easily. And this thing is very, very important, which is apply to drive option, which you need to submit, because this is the only thing. If you will submit, you will get the test mail. Application form even you can fill later, but suppose if some issues are coming, you can fill it later also. Okay, and in track my application, as I mentioned, there will be candidate registration registered option should be there. Okay, so this way you can apply for TCS NQT and your registration will be done fully. This is the overall process for applying. The apply to drive option is most important. Then application even form you can even submit later. Okay, and this kind of thing you will be seeing here. And I already talked about this. And see, this is the registration video. In future video, I will talk more about TCS NQT. If you are new to the channel, make sure to subscribe this channel, because I will be talking about each and everything I already mentioned. Okay, and NQT mock test you can enroll. The link will be in the description. As I told, please don't be late for enrolling, because there are a lot of things which I know, and there are 22 days. It's not a big time, and if you will enroll later, definitely it will create the issues. If you want to purchase any mock test series and whatever, then I would suggest to go for it. Okay, the link will be in the description. Thank you so much for watching.